Hello everyone, welcome to the SAM, that is Study Art Motivation and Education, and in this video we are going to discuss about the heart sounds. वो आपके heart sounds हैं वो कब आते हैं, किसकी वजह से आते हैं, उनके क्या characteristics हैं and what relation they have with ECG. So their occurrence, cause, characteristics and relation with ECG. Coming to the very first sound. So your first sound of heart occurs when there is isometric contraction एंड पार्ट ऑफ इजेक्शन पीरियड. यानी कि ये करेगा क्या, इसकी वजह से क्या होगा, इट अकर्स ड्यूरिंग आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड इट कॉजेज द क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व्स. ठीक है, क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व्स and it is characterized by the long, soft and low pitched sound and it resembles the lub. So the first sound is also known as lub, L-U-B-B, and it is long, soft and low pitched. Okay, and the relation it has with ECG is it coincides with the R wave of the ECG. Okay, then we have the second sound. Second sound is your, it's occur when there is protodiastole or a part of isometric relaxation. Okay, so protodiastole, isometric relaxation. फर्स्ट साउंड कब हो रहा था, when there is a isometric contraction. सेकेंड साउंड कब हो रहा है, when there is isometric relaxation. Now your second sound will cause, इसकी वजह से क्या होगा, there will be a closure of semilunar valve. Okay, फर्स्ट साउंड में एवी वॉल्व्स बंद हो रहे थे, सेकेंड साउंड में सेमिलुनार वॉल्व्स बंद होंगे एंड यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट साउंड से पूरा उल्टा होगा आपका सेकेंड साउंड. दैट मीन्स इट विल बी कैरेक्टराइज्ड एज शॉर्ट, शार्प एंड हाई पिच्ड. ओके, एंड इट इज रिजेंबल्स द डब. सो लब डब हम हमेशा सुनते हैं. हमें कुछ याद हो ना हो हार्ट साउंड्स में, लेकिन लब और डब हमें पता होता है कि फर्स्ट साउंड लब होता है, सेकेंड साउंड डब होता है. ठीक है, सो cause, occur and its characteristic. Now it resembles, it appears after 0.09 seconds after summit of the T wave. हमारा फर्स्ट साउंड कब आ रहा था, where it coincides with the R wave, और जब T wave हो जाता है उसके 0.09 सेकेंड बाद आपका सेकेंड साउंड आता है. कमिंग टू दी थर्ड साउंड. थर्ड साउंड इज ऑल्सो नॉन एज रैपिड फिलिंग साउंड. इट इज caused due to, it causes the rushing of blood into the ventricle. It causes the rushing of blood into the ventricles. It is low pitched and it is occur between T wave and the P wave. Coming to the fourth sound. Fourth sound is atrial systole. It occurs when there is a atrial systole and it causes the contraction of your arterial musculature and it is inaudible sound and it occurs between P wave and the Q wave. Okay, so this is all about the heart sounds which you have to remember. And yeah, I hope this video helps you in your academics, and if it does then I would be really grateful. Thank you so much for watching this video. Let me know in a comment section what topics you want me to cover, and I'll see you in the next video. Till then, thank you so much for watching.